Everyone, welcome to my channel Dr. Trend. I am Dr. Z. So as we all know, officially हम लोग beer market में हैं. So but the thing is, I think a wise man is the one who should learn from their mistakes what they have done. So just a quick video जिसमें analyze करेंगे कि क्या mistakes हमसे हुई और in the future आने वाले time पे जब when inshallah we will go back into the bull market. So हाँ कैसे उनसे फायदा उठा सके. So first of all, top of the list which I have learned is never ever blindly follow your influencer, includes your YouTube or the Twitter one, because there are a lot of things involved in those things. They have a paid promotions, they have their own preference of some certain coins, and फिर उसके बाद उनकी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट होती है. सो जब एक पीक पे जाता है दे सेल इट आउट. जो रिटेलर हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स हैं हम लोगों की तरह, वो लोग उसमें फंस जाते हैं. सो ऑलवेज बी श्योर कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी सर्टन कॉइन और इन एनी प्रोजेक्ट, सो यू डू हैव योर ओन रिसर्च. एंड मेरे चैनल में काफ़ी डिटेल में वीडियो है इन थ्रू विच आपको पता लग सके कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपने अपनी पर्सनल जो एक होती है एनालिसिस है उसका कैसे करना है. So second most important thing what we have learned from this bear market is anything can go to zero. What we have seen with the Luna. So what we should make out of it, that crypto is not safe. Well, crypto is pretty safe, which it has shown के जहाँ पे नैस्डैक और टेस्ला और बाकी जितनी भी बड़ी स्टॉक मार्केट हैं जिस तरह वो कोलैप्स किए हैं बिकॉज ऑफ द सो मैनी रीजंस. इन्फ्लेशन रेट, फेड्स पीछे पड़ गए मनी फ्लो के लिए अगेन. देन पोस्ट कोविड इफेक्ट विच वी हैव सीन इन लॉट ऑफ अदर कंट्रीज. इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. इवन पाकिस्तान में अब देखें कि जो यूएसडी है इट्स क्रॉस 200 रुपीज. So there are a lot of reasons why the stock market has collapsed actually. That was expected, to be honest. It was expected. But the good thing is जिस तरह Bitcoin ने hold किया है and वो parallel एक अपना जो flow बना रहा है Nasdaq के साथ, which is really promising. It's really shining in the way कि आने वाले time पे crypto होगा. Definitely बड़ी अच्छी एक news आ रही है जो especially on the top of the list I want to share with you is Emirates Airline. They are going to accept their cryptocurrency, especially the Bitcoin, which is quite good because they are the big investors and one of the big name in the universal investors, retail investors. So it's a very promising news for the Bitcoin and for the cryptocurrency as well. आने वाले टाइम पे क्रिप्टो को जो एक वो था शेकी सा फ्यूचर था वो था which they have shown clearly message out and loud कि क्रिप्टो इज नॉट गोइंग एनीवेयर. इवन अगर इस मार्केट में भी देखें तो अभी 1.3 ट्रिलियन की मार्केट है. बिटकॉइन इज होल्डिंग वेल 30K के अराउंड ये चल रहा है. सो दैट इज क्वाइट प्रॉमिसिंग साइंस विच वी हैव सीन फ्रॉम द बियर मार्केट एज वेल. नाउ ओके, द नेक्स्ट मैसेज व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर इज दिस. अगर आप लोगों ने ये कोटेशन सुनी हो कि मिलीनियर्स आर मेड इन द बियर मार्केट. सो एज वी आर इन द बियर मार्केट 30K से yes we can drop down to even 24K. सितंबर वाला टाइम बड़ा क्रूशल होगा. इफ यू सी द लास्ट बियर मार्केट सितंबर वाज वेरी क्रूशल टाइम. अभी कैपिटलाइजेशन चलेगी और उसके बाद शायद फर्दर ड्रॉप करेगा. सो दिस इज द हाई टाइम एक्चुअली टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो. और जैसा कि मैं हमेशा इसमें बात करता हूँ कि DCA इज द बेस्ट अप्रोच. DCA इन बोथ इन बाइंग एंड इन परचेजिंग इट्स द बेस्ट अप्रोच कि जिससे आप उसको मैक्सिमम प्रॉफिट उसका बुल मार्केट में आप ले सकते हैं. सो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो, डिटेल वीडियो के जिसमें DCA के बारे में हम बात करेंगे. इसमें मेरी ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियो है. इफ यू हैवंट वॉच यू गो एंड वॉच दैट वन. And the last and not the least is this is a very crucial time, the fourth point in the bear market के जहाँ पे हमने अपनी positions को rectify करना है. rectify in the means कि अगर किसी project में हमने invest किया and they have lost like Luna. Lot of people have went to zero because of the Luna, and I had the second biggest portfolio on the Luna. I lost the money, but it's okay. It's a part of the big game because that's what I'm always talking in my channel कि आपने क्रिप्टो में हमेशा वो पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपकी सेविंग्स का भी 50% हो. The money which you are ready to lose in a way. ये नहीं कि वो जीरो पे बिल्कुल चला जाए. उसका ये मतलब है कि अगर बियर मार्केट में किसी भी टाइम चली जाती है बिकॉज ऑफ अनसीन रीजन लाइक द कोविड हो गया, जिस तरह फैट इसके पीछे पड़ गए, तो यू शुड हैव द अदर एसेट्स के जिसके आप ऊपर रिलाई कर सकें. आप ये ना हो कि आप अगर 50% आपका पोर्टफोलियो डाउन है सो यू हैव टू सेल एवरीथिंग इन द लॉस ऑफ 50%. ये इसका ये मतलब है कि ऑलवेज सेव 50% ऑफ योर सेविंग ताकि आने वाले टाइम पे इट विल नॉट पुट मेजर डेंट ऑन योर financial conditions. So be wise what you are investing.
ताकि वो अगले आपके आने वाले 2 से 3 और आइडियली 5 साल तक आपको वो पैसा ना चाहिए हो, ताकि आप उस पे जो है ना अपना DCA करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बीयर मार्केट के लिए अपना बिल्ड कर सकें. सो डेफिनेटली आई एम कमिंग अप विद 3 वीडियोस एक्चुअली, जिसमें मैं पोर्टफोलियो जो है री एलोकेशन की बात करूंगा. ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट जो मेरे ब्लू चिप कॉइन्स होंगे, जिसमें आई विल कीप डूइंग द DCA, जिनको मैं लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा. और उसके बाद मीडियम रिस्क हैं, और उसके बाद हाई रिस्क हैं विच कैन पोटेंशियली गिव यू 100x और मे बी मोर देन दैट डिपेंडिंग ऑन द good day or your own luck. So stay tuned on my channel. Do subscribe if you haven't subscribed till now. मेरा WhatsApp का ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. So inshallah very soon I'm coming up with 3 videos जिसमें हम बात करेंगे कि अपने पोजीशंस को कैसे अब आपने लेना है, किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप ब्लाइंडली फेथफुली इन्वेस्ट कर सकते हैं, with definitely some of the stats which shows कि हाँ these projects are going towards the good direction. So till then, take care of yourself, have a safe trading, and love, peace and care.